श्री फगन सिंह कुलास्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यवाही के क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Aircraft Carriage of Dangerous Goods Amendment Rules of 2022 as mentioned against my name at serial number 2 in the revised list of business. श्री दानवे राव साहिब दादा राव। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। श्री वी मुरलीधरन। Mr. Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 5 in today's list of business. श्री हरदीप पुरी। श्री रामेश्वर तेली। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री हरदीप पुरी। Sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Kaushal Kishore, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 7 in today's revised list of business. श्री अजय भट्ट। Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 8 in today's list of business. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 16th December 2022 passed the Constitution Scheduled Tribes Order 3rd Amendment Bill 2022. I lay a copy of the said bill on the table. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, Shri Vivek Thakur. Chairman, sir, with your permission, I rise to present the following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. Reports of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Shri Samir Oraon. सभापति महोदय, मेरे नाम के सामने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति 2022-23 के निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। भारतीय स्टेट बैंक के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण और ऐसी संस्थाओं को बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उपलब्ध कराई जा रही ऋण सुविधाएं और अन्य लाभ विषय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 8वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन और दूसरा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विषय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 13वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 19वीं प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। Statements by Ministers, Shri Fagan Singh Kulaste. सर, आपकी अनुमति से मेरे नाम के सामने लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। श्री अजय भट्ट। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में वक्तव्य संख्या 2 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 19वें, 20वें, 21वें और 22वें प्रतिवेदनों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में
रक्षा बजट BRO ICG रक्षा संपदा संगठन DPSU CSD पूर्व सैनिकों के कल्याण और रक्षा पेंशन मांग संख्या 18 और 21 थल सेना, नौसेना, वायुसेना, संयुक्त स्टाफ MES पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल मांग संख्या 19 और 20 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय खरीद नीति रक्षा योजना और विवाहित आवासीय परियोजना मांग संख्या 20 आयुध निर्माणियां DRDO DGQA और NCC मांग संख्या 19 एवं 20 से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। Honorable members, I have received 9 notices under Rule 267 for suspension of rules and to take up the matter indicated therein. I have given my thoughtful consideration to all the notices. Honorable members would recollect on December 8, I had imparted a comprehensive ruling on Rule 267. The rule stipulates fulfillment of certain conditions before a member can avail methodology of that rule. In spite of categorical indications, none of the notices measure up to the requirement. Honorable members, it is a painful duty for me that not only the rule is outraged, no attention whatsoever has been laid on the rule. The notices are drawn in a manner as if the rule doesn't exist. I expect the honorable members to follow the procedure indicated in the rules, go through all the 2 essential elements, and then carve out notice. Honorable members, as you are aware, during the tenure of my distinguished predecessor, this rule was not invoked even once, because this rule is request notice. It calls for serious deliberation. You are seeking suspension of the proceedings of this House to take over the work. I painfully report to you that loss of more than 100 minutes of disruption on 13th, 15th and 16th of December has sent not a good signal. Crores of public exchequer that were meant to be utilized, time that was supposed to be used for public purpose, issues that were required to be discussed could not be discussed. This august House is a unique platform. We must share vision, passion, mission of framers of the Constitution. It is time for us to be inspired and motivated by them so that we set very high standards of emulation. Generating optics of disruption brings a very bad name to us. It generates disillusionment. It sends a signal as if those who have been elected to this august House to perform the solemn duty to act as House of Elders, the upper house, and they conduct themselves in a manner that leaves much to be desired. I would urge the honorable members to carefully deliberate on what I have indicated. I will be open to any notice that is in accordance with the mechanism, any notice that is in line with the spirit and essence of the rules will receive my consideration. I need to indicate to the honorable members, I am one of you. I draw my power from you.
I draw my authority from you. The tradition of this house is the writ of the chairman runs. In spite of being cautioned, in spite of being reminded on 3 occasions by the deputy chairman, my ruling was not heeded and the disruption takes place. It is my painful constitutional obligation to examine all these indiscretions. I am focusing on that. I have hinted some members to see me in the chamber and I will attend to the issue. It is never a pleasure, never a satisfying moment to visit a member with any action. But getting away and abdicating constitutional obligation is not an option either with you or with me. I am your soldier. I am your part. But we all have to serve at large more than 1.36 billion people. And therefore, this House has to rise to a level expected of it and not engage into usual rhetoric optics to generate a scene which is ephemeral. I am sure my suggestions will be heard. The Honorable LOP, when he reflected in the House, had indicated a rule. I would urge the Honorable LOP to go through that rule, and that rule makes it very clear, unless otherwise provided in the rules. Honorable members, I have twice gone through every reflection by every member. All I can say is the intellectual ability, the experience, the exposure, the talent of the House is not being reflected. We all are possessed collectively of a wisdom. The nation is proud of it. We have to reveal it. I would therefore leave everything to be deliberated. I find the notices are not in order. No. Honorable members, would you please take your seat? Take your seat. Take your seat. 1 second. Take your seat. I think I have not made myself clear. I have categorically indicated I cannot give attention to any notice that is deficient. I cannot focus on any notice that miserably fails with minimum requirement of fulfillment of rules. This is not a platform for anyone just to rise and say whatever one feels like. We have to follow the rules. For 1 second. Once you follow the rules, you will get platform. This is a place for dialogue, deliberation, discussion, and that will happen debate. Shri Pramod Tiwari. एलओपी को पहले बोल पाते हैं सर। ये कहा मैं बैठ गया। अब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा हूं। सर किसने कहा? किसने कहा? 1 second. No cross talks, please. No cross talks. Go ahead. नियम संख्या 39 के तहत हम प्रश्नों की सूचना देते हैं और नियम संख्या 47 में प्रश्नों की ग्राह्यता की बहुत सारी शर्तें लिखी हुई हैं, 22 शर्तें। Raise your point of order. वही कर रहा हूं सर, नियम बता रहा हूं अभी तो। Articulate the point of order. You can expect the members to know the rules. Go ahead.
पिछले सत्र के अंदर मेरे 10 प्रश्न जिनकी मैंने सूचना दी थी हटा दिए गए। आज तक मुझे, और इस सत्र में, सर बात तो सुन लीजिए सर, इस सत्र में मेरे 3 प्रश्न हटा दिए गए और अभी तक उनकी सूचना भी नहीं दी गई है कि किन कारणों से हटाए गए, जबकि मेरे प्रश्न 22 की 22 शर्तें पूरी करते हैं। ऑनरेबल मेंबर, टेक योर सीट। सर आपके नाम में होता है, प्रश्नों का हटाना और ग्रहण करना आपके नाम में होता है, लेकिन करते अधिकारी हैं। Don't convert it into a classroom that I ask you to sit down. Please. Your point has been noted, and to put it in a different manner, the boot is on your leg. If this has happened, you read the rules, you'll find a way out. If you require further assistance, go to the table office, they'll help you out, rather than raise a point of order. If you have a grievance, and you can always see me in my chamber, I'm always available. We'll find a way out. Honorable members, one second. I am taking now notices for matters of urgent public importance. Shri Pramod Tiwari to focus on what is listed. I'll listen to the LOP. Go ahead. Start. सर, मैंने एक नोटिस 0 और में दी है, पर मेरी नजरों में देश से बड़ा कुछ नहीं, उसकी सीमाओं की पवित्रता से बड़ा कुछ नहीं है। मैं इस पे रख रहा हूं, मैं 267 पे ध्यान देते हुए, जिस तरह चीन हम पर हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, प्रधानमंत्री की खामोशी कुछ न कुछ राज है। पढ़ रहा हूं। मिस्टर प्रमोद तिवारी, you are a senior member. Yes, that's why I'm speaking. You spent more than 4 decades in parliamentary career. I expect you to set some standards. ठीक है। Please go ahead. Go ahead. मैंने आपसे कहा, मैंने देश में बढ़ती हुई सामूहिक आत्महत्याओं के बारे में युवा पीढ़ी कहा था, लेकिन मेरी चिंता सबसे बड़ी देश के प्रति है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि कृपया 267 एक बार मेरे साथ पढ़ ले। हो सकता है मेरे समझने में भूल हो रही हो। On record, nothing will go on record. सर मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप 267 पढ़ ले। मिस्टर प्रमोद, कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर प्रमोद तिवारी, हमला कर रहा है, प्रधानमंत्री की चुप्पी कहानी कह रही है कि राज कुछ है मसला। You can have it from me. I would go to any extent to make available platform of expression to everyone in accordance with rules. But if senior member like you, with huge experience of more than 4 decades, is to set a standard where I will get inputs from young boys and girls, sir, what is happening in the upper house? What kind of conduct being exhibited? Shri Mujibullah Khan, One second, LOP, one second. Take it. I would expect the honorable member to be respectful, maintain composure. It is a house where we have to act with cordiality, amiability. Sit down. Please sit down. I have not given you a seat. You don't have to advise me. One second. Honorable member, you don't have to be spokesperson of the LOP. One second. I will not expect such kind of interruptions. I would listen to the LOP after I am through with this work, because I have respect for the institution. One second, let's not have a running battle. Please take your seat. Please take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. Can we conduct the house like this? No, you think I must go by your dictate? Then you want to running. You want to running. Take your seat. Unless I give. But follow the rules, and you will know enough scope is there.
हाथ उठा उठा के थक गया इसलिए एकदम उठ गया। बोलिए सर, बोलिए। नहीं, ये मैं डिसेंसी दिखाना चाहता हूँ। मैं 5 मिनट से हाथ उठा रहा हूँ, उंगली उठा के आपका अटेंशन ड्रॉ करने के। सर, आप तो मुझे अंगुली पकड़कर रास्ता दिखा सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है। वो साहब, वो एक्सपीरियंस यहाँ काम नहीं आ रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ। क्यों? That is what I am saying. खड़गे जी, use your experience. Use your experience, खड़गे जी, of several decades, so that reputation of this august house is not outraged. Yes, sir, I am following the reputation of this house. Right, how the other opposition leaders behaved at that time. That also I know. Everything I know. But sir, you have a patience to listen to us. Right, please. Then you reject. Articulate your point, sir. Sir, articulate that much I can't do it because you are a great lawyer and you can do it. But a small lawyer who was practicing only 1 year and left the job and became MLA, till today I am in the legislature. So I don't want to tell that. सब मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ। ये बताइए। आप बार बार जो हमको सलाह दे रहे हैं या क्या कहेंगे, हिदायत क्या बोलेंगे, दे रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन दूसरे मेंबर्स जो कहते हैं, कृपया करके उस बात को भी आप सुनेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। मुझे कोई पावर नहीं है और आप गलत पॉइंट नोटिस दे रहे हो, ये इस सदन में आया तो बाहर यही जाता है कि कोई मेंबर रूल्स नहीं देखता, कोई किताब नहीं पढ़ता, तो सिर्फ सीधा आता है और कुछ ना कुछ बोल देता है, ये सदन के बाहर चले जाता है और मीडिया में भी वही आता है। सर, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। रेसिड्यूरी पावर्स नोटिस ये किताब में है क्या, किताब के बाहर है? रेसिड्यूरी पावर्स, जब रेसिड्यूरी पावर्स आपको है, उसी के तहत आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि भाई सभी रूल, अगर रूल में भी नहीं है तो आपको ये पावर है, मर्द को औरत बना सकते हो और औरत को मर्द बना सकते हो, ये पावर है। और ये कहता है रेसिड्यूरी पावर, नहीं ये है। तो ये देखिए ऑल, अरे दिस इज रेफर्ड इन यूके, दिस इज रेफर्ड इन यूके डिबेट। पार्लियामेंट ऑफ यूके हैज गॉट पावर्स। Why should you jump every time? Why should you jump every time? But rest powers are there. I think, 1 second, Alok. I think I should get some real physical analysis of certain seats, because on those seats I find there are springboards. No. And those springboards immediately get up. Sir, देखिए, मैं लाइटर वेन की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये यूके पार्लियामेंट में यह कहा गया है कि भाई पार्लियामेंट को सभी पावर है, एक पावर नहीं है जो स्त्री को पुरुष बनाए या पुरुष को स्त्री बनाए, ये छोड़ के सारी पावर है। ये पार्लियामेंट में कहा गया है यूके के, और वही फॉलो कर। और दूसरी चीज सर, मैं पढ़ता हूँ, ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रूल्स and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may. Sir. From time to time, direct. This is 266. Sir. Then 267, ये तो suspension of rules है, as already we have read. Therefore, we are requesting, आपको रेसिड्यूरी पावर्स है, इसको सस्पेंड करिए रूल्स को। और चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। और प्लीज नो, आज वो वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को हमारी जगह
वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सभर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? प्लीज नाउ तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, यू सस्पेंड द रूल्स, अलाउ द डिस्कशन, वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। वन सेकंड प्लीज। सर, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम सभी माननीय सदस्यों के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपके माध्यम से सर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता हूं कि एक पद की गरिमा जरूर होती है, लेकिन पद की गरिमा स्वयं ही अगर व्यक्ति उसको गिराने में लगा रहे और उससे हम पूरे सदन की गरिमा ना गिराए, वो अपनी गरिमा गिराने के लिए उनको जो करना है करें। माननीय अध्यक्ष महोदय ये बार बार विषय उठाते हैं कि हमें चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूं जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी सच्चाई है कि आज से कई वर्ष पहले 2012 में इन्हीं की पार्टी के जो मंत्री थे ई अहमद, उन्होंने सदन में कहा, मेक योर पॉइंट, China continues to be in illegal occupation of 38,000 square kilometers in the Indian state of Jammu and Kashmir. 2012 का इन्हीं के मंत्री का ये वक्तव्य हाउस में एक सवाल के जवाब में ऑनरेबल बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते। और मैं समझता हूं कि एलओपी मिसयूज कर रहे हैं कि उनके पद के वजह से वो उठ सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन, one second. Honorable Leader of Opposition has raised a point with respect to Rule 266. I expect all the members to bestow attention on this. It emanates from the LOP. What does the rule say? And the rule says, all matters not specifically provided in these rules. And Rule 66 can be availed only and only with respect to those matters which are not specifically provided. I will urge the Honorable LOP to direct his office to be little more functional, to involve with the rules. No. खड़गे जी, खड़गे जी, पेशेंटली बैठिए एक बार। खड़गे जी, come on, sit down. Honorable members, it is my unpleasant duty to again read Rule 266. Honorable LOP. Come on, sir. Can you please take your seat? Can you take your seat and listen to the chair? That is, I think, the minimum you should do. Rule 267.
One second. One second, honorable members. The point raised by the LOP with respect to Rule 266 in an emotive manner, the rule requires. I'll come on. All matters under Rule 266, Honorable Khadgeji, you can raise those matters which are not specifically provided in these rules. This matter is provided in these rules. When a matter is provided in these rules, Rule 66 does not come into picture. This is my ruling. Rule 66 comes into picture only and only when matters not specifically provided. Shri Mujibullah Khan, absent. Shri Sushil Kumar Modi. Shri Sushil Kumar Modi. सभापति महोदय, Shri Sushil Kumar Modi. सेम सेक्स मैरिज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के विरोध में के प्रयास का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सती महोदय 33 से ज्यादा देशों ने समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान कर दी है। इसी सप्ताह अमेरिका के सीनेट ने सेम सेक्स मैरिज के लिए कानून बनाया है। जापान is the only country in G7 which has not enacted same-sex marriage। यहाँ तक कि एशिया के अंदर ताइवान जो है वो अकेला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। भारत में भी जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं वो लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान की जाए। सभापति महोदय, भारत के अंदर विवाह की संस्था को पवित्र माना गया है और विवाह का मतलब होता है बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल फीमेल, उसके बीच का संबंध। यह सदियों पुराना हमारे जो रीति रिवाज रिचुअल्स हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारे सांस्कृतिक लोकाचार है। The honorable member is talking about marriage. You need to be more careful. और सामाजिक मूल्यों का हिस्सा है। हिंदू धर्म में भी विवाह को डिवाइन ओरिजिन के रूप में माना गया है। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इसी रूप में आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत के अंदर सेम सेक्स मैरिज इज नाइदर रिकॉग्नाइज्ड नॉर एक्सेप्टेड इन एनी अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज लाइक मुस्लिम पर्सनल लॉ or any codified statutory laws. Same-sex marriage would cause complete havoc with the delicate balance of personal laws in the country. परिवार, बच्चे और बच्चों का पालन पोषण भी इससे जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं तो एडॉप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, वाइफ राइट टू स्टे इन मैरिटल होम, इन सारे चीजों का जो संबंध है वो विवाह संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ उपसभापति महोदय, और इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि दो जज बैठकर इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। संसद में इस पर डिबेट होनी चाहिए, समाज में इस पर डिबेट होनी चाहिए। कुछ लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक लोग और जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो भारत को पश्चिम का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के कानून को लागू करवाना चाहते हैं। और इसलिए मैं सेम सेक्स मैरिज को वैधानिक मान्यता दिए जाने का विरोध करता हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि मजबूती के साथ सेम सेक्स मैरिज के विरोध में न्यायालय में अपनी बात रखें। और मैं जुडिशरी से भी आग्रह करता हूं कोई ऐसा निर्णय न दें जो इस देश के कल्चरल इथोस, यहाँ के संस्कृति। श्रीमती शांता छेत्री। Sir, for allowing me to speak. Sir, I seek to draw the kind attention of this August House that the benefit of Hill compensatory allowance has been given to Northeastern and Sikkim postal employees. But the same has not been given to the postal employees of the hilly region of Darjeeling and Kalimpong. If Sikkim can fall under Northeast India, why is Darjeeling and Kalimpong region not included?
Therefore, sir, I would urge the Honorable Finance Minister to include the postal employees of Kalimpong and Darjeeling Hill and grant Hill compensatory allowance to them as well. Thank you, sir. Shri Anil Prasad Hegde, absent. Shri Sant Balbir Singh. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 53,000 ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 67% ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਸਿਰਫ 1.5% ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਹ 9% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 39 ਤੱਕਰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ Time is over, please, time is over. Manye V. Vijay Sai Reddy. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, my 0-hour request is for establishing Drone Research Center Institute in Visakhapatnam. Sir, we are at the cusp of fourth industrial revolution, and one of the most important inventions is the drone technology. Drone technology has many applications and in numerous sectors such as agriculture, defense, and even logistics, and India is well placed, and only thing it requires is a push from the central government to ace the critical technology. Sir, agriculture is one of the sectors very important for Indian economy because 65% of the population are either dependent on directly or indirectly on agriculture. Sir, drones can be used for spraying pesticides, monitoring the moisture,
providing information of crop growth stage. Drones can increase crop production by 15% while saving to farmers a lot of labor. Sir, I therefore request the central government to establish a center for excellence in research on drone technology in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Sir, basically for 3 reasons, sir. One, 65% of AP population is engaged in agriculture either directly or indirectly, and the farmers are very forward-looking. And Andhra Pradesh particularly is home to significant pool of skilled IT manpower famous for their talent and innovation. Number 3, AP is one of the largest producer of fruits, vegetables, rice, and now is also shifting to production of palm oil. Therefore, I humbly request this Government of India to consider the demand for establishing the research center on drones in Visakhapatnam, sir. Thank you. Thank you. माननीय हरनाथ सिंह यादव जी। माननीय उपसभापति जी, देश की न्याय प्रणाली के प्रति जनता के मन में तेजी से गहराती निराशा और कुंठा के प्रति मैं सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। देश के नागरिकों को अब सरल, सुलभ, सस्ता, शीघ्र और पारदर्शी न्याय की अपेक्षा करना बेईमानी की बात लगने लगी है। महोदय, 5 करोड़ मुकदमों के लंबित होने का अर्थ यह है कि 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ नागरिक दोषपूर्ण न्याय प्रक्रिया के उत्पीड़न के शिकार हैं। आखिर ये जवाबदेही किसकी है? महोदय, सर्वोच्च न्यायालय अपने में असीमित शक्ति समेटे दिखता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकार के मुकदमों को निपटाने के लिए समयबद्ध न्यायिक प्रणाली अर्थात जुडिशियल चार्टर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लागू करता, जिसमें प्रत्येक अपराध या वाद को तय करने के लिए समय सीमा निश्चित हो। महोदय, निचली अदालतों से लेकर के उच्च अदालतों तक रिश्वतखोरी और दलाली आम बात है। आखिर साफ सुथरे तरीके से न्याय मिले, ये जवाबदेही किसकी है? हमारा न्यायिक तंत्र भाषाई जटिलता को बदलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि वादी और प्रतिवादी की समझ में न आने वाली अंग्रेजी भाषा को बनाए रखने तथा देश के नागरिकों को देश की मातृभाषाओं में न्याय न देने की आपकी जिद क्यों है? माननीय, संविधान में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आरक्षण का प्रावधान है, परंतु सर्वोच्च न्यायालयों व उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में संविधान में प्रदत्त आरक्षण को न्यायिक तंत्र लागू करने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? यह अकाट्य सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में जब तक सभी वर्गों के जजों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक वंचित व निर्धन वर्ग के लोगों को सही न्याय मिलना कठिन है। माननीय, देश के लोगों को सरलता, शीघ्रता और पारदर्शिता से न्याय मिले, यह जिम्मेदारी हमारे न्यायिक तंत्र की है। साथ ही संसद के कार्य में न्यायपालिका का अनावश्यक असंवैधानिक हस्तक्षेप रुकना भी जरूरी है। अन्यथा हम संसद की गरिमा को गिराकर देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को तहस नहस करने का काम करेंगे। माननीय, आज देश में कॉलेजियम प्रणाली की काफी चर्चा है। सर्वोच्च न्यायालय देश को ये बताए कि संविधान की वह कौन सी धारा है जो ये कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान से ऊपर है। दूसरे, संविधान की वो कौन सी धारा है जो संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को खारिज करने का सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देती है। महोदय, सर्वोच्च न्यायालय यदि खुद को संविधान के रखवाले के रूप में देखना चाहता है तो उसे सबसे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। अंत में मैं आम जनता को सस्ता, सरल, शीघ्र और पारदर्शी न्याय दिलाने के लिए सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री विवेक ठाकुर जी। माननीय विवेक ठाकुर जी। आदरणीय उपसभापति महोदय जी, मैं सदन का ध्यान आप एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में आकर्षित करना चाहूंगा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से संबंधित है। उपसभापति महोदय, वर्ष 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के पश्चात निर्भया गैंग रेप जैसी विभत्स घटना के कारण 2015 में एक नया कानून जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लाया गया, जो स्वागत योग्य रहा, जिसमें क्राइम को 3 कैटेगरी में बांटा गया: माइनर, सीरियस एवं हीनस, जिसमें जो जुवेनाइल 16 से 18 वर्ष के बीच है और यदि वह हीनस क्राइम करते हैं तो उन्हें एडल्ट मानते हुए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
परंतु आदरणीय उपसभापति महोदय, वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें भारत सरकार द्वारा 2015 में लाए गए मूल कानून के सेक्शन 2 क्लॉज 33 में वह अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा थी, उन्हें हीनस क्राइम की कैटेगरी में रखा गया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट के 2020 के जजमेंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि जिन अपराधों में 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, परंतु जिसमें कोई मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है अथवा 7 वर्ष से कम मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान है, उन्हें हीनस क्राइम में नहीं गिना जा सकता। इसी कारण भारत सरकार को 2021 में कानून में संशोधन करना पड़ा। इस संशोधन से आदरणीय उपसभापति महोदय, कई हीनस क्राइम में जुवेनाइल क्रिमिनल्स बिना सजा पाए ही छूट जा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप 2020 में जिस अपराध में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें अपराधी आईपीसी सेक्शन 304 में कल्पेबल होमिसाइड का दोषी था, जिसमें 10 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान था। परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण आईपीसी 304 में कोई मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान ना होने से उस पर एडल्ट के रूप में मुकदमा नहीं चला। इसलिए यह बहुत गंभीर विषय है सभापति महोदय, क्योंकि सिर्फ मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान ना होने से हीनस क्राइम करके भी जुवेनाइल अपराधी राहत प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में कठुआ गैंग रेप केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह ऑब्जर्वेशन दिया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 15 में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि कई जुवेनाइल क्रिमिनल्स हीनस क्राइम में राहत प्राप्त कर रहे हैं। चाहे जामतारा का ऑनलाइन फ्रॉड हो या डार्कनेट के माध्यम से ड्रग पेडलिंग हो, रेप्स हो, शूटआउट हो, इस सभी में अधिकांशतः देखा गया है कि 18 वर्ष से कम जुवेनाइल्स का क्रिमिनल गैंग या इंटरनेशनल सिंडिकेट्स क्राइम के लिए यूज करते हैं। इसलिए विभिन्न देशों में भी जुवेनाइल को एडल्ट मानते हुए केस चलाने की उम्र बेहद कम रखी गई है। इसलिए आपके माध्यम से उपसभापति महोदय, मेरा सदन से एवं सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस कानून में संशोधन लाया जाए, जिससे जुवेनाइल द्वारा होने वाले अपराधों में भी कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी हो और अपराधियों को सजा मिल सके। धन्यवाद। माननीय रामचंद्र जांगड़ा। माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी। धन्यवाद मान्यवर। 0 आवर। मैं स्वर्णकार शिल्पकार समाज की अनदेखी और बढ़ती हुई बदहाली पर सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित आपके माध्यम से करना चाहता हूं। मान्यवर, भारत का स्वर्णकार समाज देश के प्रतिष्ठित और कुशल कारीगर समाज माना जाता है। भारत के स्वर्णकार ने अपने हस्त कौशल से पूरे विश्व को अपनी कारीगरी का लोहा मनवाया है। वर्ष 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आने से पहले ये 1.25 करोड़ लोग खुशहाली और प्रतिष्ठा का जीवन जी रहे थे। इसके बाद इनके आर्थिक पतन की शुरुआत हुई। यद्यपि इसकी शुरुआत 1962 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट के द्वारा ही हो गई थी, जिसके माध्यम से सोने के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1963 में 14 कैरेट से अधिक सोने के जेवर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1968 में सोने को सिक्कों व छड़ों के रूप में रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। सोने को जेवर के रूप में केवल 100 ग्राम तक सीमा तक रखने के लिए सीमित कर दिया गया। बड़े लाइसेंस प्राप्त स्वर्णकारों को 2 किलो तक सोना रखने की सीमा निर्धारित की गई। गांव का स्वर्णकार लाइसेंस प्रक्रिया से अनजान था, इसलिए वो पीछे रह गया और बड़े बड़े कारीगर और बड़े बड़े मालों के पास ये काम चला गया। मान्यवर, उसके बाद एक्ट में संशोधन हुआ और छोटे कारीगरों के लिए 300 ग्राम सोना जेवर के रूप में रखने की सीमा तय की गई। महोदय, 1990 में तत्कालीन सरकार द्वारा सोने का काम कारपोरेट घरानों के लिए खोल दिया गया। उसके बाद ये काम तनिष्क, रिलायंस, पीसी जल और कल्याण ज्वेलर्स वगैरह बड़े घरानों के पास चला गया और गांव का छोटा कारीगर स्वर्णकार उनका मात्र मजदूर बन के रह गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनकी बदहाली की स्थिति ठीक हो जाए, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। कारपोरेट घरानों द्वारा किया जा रहे सोने के व्यापार पर कर प्रतिशत बढ़ाया जाए। लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा ज्वेलरी व्यापार पर भी कर की सीमा को बढ़ाया जाए और अमूल मिल्क की तर्ज के ऊपर ग्रामीण छोटे कारीगर स्वर्णकार शिल्पकारों को संघ बनाकर सोना खरीदने के लिए एमएसएमई की तर्ज पर उनको लोन दिया जाए और उनकी खरीद की व्यवस्था किया जाए, ताकि गांव का छोटा शिल्पकार जो स्वर्णकार है वो उभर सके। मान्यवर, एक और बहुत गंभीर विषय, दंड संहिता की धारा 411 का बहुत दुरुपयोग होता है। कोई भी स्वर्णकार शिल्पकार अगर छोटी सी कोई जेवरात खरीद लेता है, कोई उसकी शिकायत कर देता है झूठी, तो पुलिस को उसको प्रताड़ित करती है। जब 300 ग्राम सोने के जेवर खरीदने का उसको अधिकार है, तो वहां तक उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज न करवाया जाए, ताकि पुलिस की अनावश्यक प्रताड़ना से यह समाज बच सके। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी। माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे यहाँ के दैनिक यात्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरठ से दिल्ली रेवाड़ी होते हुए गंगानगर एक ट्रेन शटल चलती थी लंबे समय से। उसमें दैनिक केंद्रीय कर्मचारी और यात्री
उससे टाइम पे आते थे। अब वो बंद कर दी गई है, जिससे हजारों कर्मचारी और यात्री समय पर नहीं आ पाते, या आते हैं तो गाड़ियों से आते हैं, परेशानी होती है, और जिस कारण से आए दिन बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वैसे मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, एक्सप्रेस वे बना है, लेकिन इससे दिल्ली में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती है, यात्रियों की परेशानी भी होती है, और इसमें मोदी नगर के यात्री, गाजियाबाद के यात्री, मेरठ के यात्री आते थे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा तो उस ट्रेन को चालू किया जाए, लंबे समय से चलती आ रही है, ताकि यात्रियों की सुविधा हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय कि शून्यकाल में महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर आपने दिया। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% की आरक्षण देने का काम EWS कोटे के तहत किया। इस पर कोट के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के उम्र सीमा की छूट का प्रावधान नहीं है, जबकि अन्य वर्गों को छूट मिलती है। मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के आधार पर जिन्हें उम्र की छूट है, उसमें SC ST 5 साल की, OBC 3 साल की छूट है। इसी तरह सरकारी नौकरियों में समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल की है। वहीं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 35 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 वर्ष तय है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कमजोर सवर्णों के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाए तथा परीक्षार्थियों को लगने वाले आवेदन शुल्क में रियायत दी जाए, ताकि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा हो सके। मानवर EWS का जो 10% का आरक्षण, ये तो पूर्व की सरकारें भी कर सकती थी। मैं धन्यवाद देता हूं इस सदन के माध्यम से कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीब सवर्णों परीक्षार्थियों पर भी ध्यान देके और सम्मान जीवन जीने का अधिकार उन्होंने दिया। मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करता हूं कि इस पर भी ध्यान देते हुए उन लोगों के आवेदन शुल्क और उम्र सीमा में रियायत दी जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। डॉक्टर कनिमोजी NVN सोमू। Thank you, sir. Sir, Article 323B of the Indian Constitution deals with the establishment of tribunals for other matters, and Article 323A of the Indian Constitution deals with the administrative tribunals. Many cases are emerging in the medical sector which needs quick readdressal. There are a lot of medical issues that happen in hospitals, clinics, and also offences done by the medical practitioners. Sir, in India, there are many tribunals for solving the cases on particular organizations or institutions, but there is no tribunal for the medical offences. Till today, the offences that take place in the medical sectors will ultimately go to the courts, and the judgments are rendered by the judges who have partial knowledge on the medical issues. Sir, tribunals were constituted with the objective of delivering speedy, inexpensive, and decentralized adjudication of disputes in various medical crimes and related matters. If there is a medical tribunal in India, the disputes or the offences that arise in the medical sector can be controlled. However, the decision of the tribunal may not be the final, but the parties can move for an appeal further to the High Court or the Supreme Court. Sir, a medical practitioner has the duty to exercise due care. Breach of duty will make the doctors liable for damages. Medical negligence of doctor in service results in serious damage or death of a patient is liable for a criminal offense under the Indian Penal Code 1860. But most instances, doctors from all the medical fields are liable under the Consumer Protection Act. The patients who are caused severe injuries at the time of the treatment could now onwards sue the doctors in procedure-free consumer courts for compensation. So the important reason for the need of the medical tribunal is a case under Consumer Protection Act takes too long to conclude, which will be the agonizing nightmare experience for both the patients and the doctors. The doctor will suffer and demoralize throughout the trial, and the medical career of the doctor is also affected. The patients too lose too much time and energy till the end, and the compensation awarded will not be sufficient for the trauma experienced by the patient at the time when they receive it. Sir, the District Consumer Forum does not have members from the medical fraternity,
and hence most judgments turned out to be one-sided, either in the favor of the deponent or the opponent, and both instances are unjustifiable. The cases under consumer protection law would give wrong signals about the medical professional. Most doctors are middle-class citizens who practice on their own. It is inappropriate to expect doctors to be able to raise to such large amounts. Such judgments would demoralize the doctors. Sir, India requires medical tribunal so that the offences that take place in the hospitals, government health schemes or programs, offences done by the doctors, hospital authorities, services rendered by the ambulance authorities. Thank you. Your time is over. Thank you. You're not going on record now. Thank you. You have only limited time for 3 minutes. Dr. Amar Patnaik. Thank you, sir. Chairman, sir, I'm so happy Honorable Finance Minister is also here. I'm going to raise a point relating to her department. This is relating to the coal cess or the clean energy cess. This was introduced by the Government of India in 2010, basically to to compensate for the extraction of coal, which causes a lot of environmental issues relating to air quality, water quality, pollution at the topsoil level, on transportation, on drainage systems, and therefore this was introduced. But subsequently in 2017, by a decision of the GST Council, this was subsumed into the GST compensation cess. Now that the GST compensation cess has been withdrawn, this we would like to know. I would like to know what is the position of this cess. And Honorable Chief Minister of Orissa, Naveen Patnaik, had made a suggestion that this should be converted into environment and rehabilitation cess and given back to the states once again, particularly the coal-bearing states. Orissa, for example, is the second largest producer of coal in the country after Chhattisgarh. The amount of environmental pollution that is caused due to this extraction, because India's dependence on coal will continue, but since we are committed to a net zero kind of a transition, I think a good idea would be to convert this into the environment and rehabilitation cess and distribute among the coal-bearing states, so that for the extraction of coal, the amount of environmental pollution cost can be compensated to the extent by afforestation measures and other kind of measures, and we would be actually having a situation in which the states would be having incentive to go in for this clean energy procedures. Thank you so much. Thank you. Sri Raghav Chadha. सर, आज मैं पंजाब और पंजाबियों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, पूरी दुनिया में पंजाबी रहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों में बसते हैं, कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन आज पंजाब से इन देशों की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो बहुत खराब है। पंजाब में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक मोहाली में, एक अमृतसर में, और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सिर्फ नाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। सर, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ना के बराबर ऑपरेट करती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ना के बराबर उड़ती हैं, और किसी एक आधे छोटे देश अगर वहां से फ्लाइट जाती भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि उसकी कोई सुविधा लोगों को नहीं मिलती। आज पंजाबी बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। सर, आज पंजाबी भाषा को ये हमारा सौभाग्य है। सर, मुझे खत्म करने दीजिए सर। क्वेश्चन 121, क्वेश्चन और 121, श्रीमती बन्ना जी। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन 121 एक प्रति सवा पटल पर रख दिया गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय सदस्यों से, क्वेश्चन आवर का अपना महत्व है, वो शुरू होता है तो उस पर फिर बात चर्चा होती है। प्लीज। Sir, the iron and steel sector is considered as the core of our economy and is projected to grow 5 times in the next 2 decades. So the steel sector is extremely energy and resource intensive and its present form highly polluting. So today the production of 1 ton of steel means the emission of 3 tons of carbon dioxide, and globally this is 1.4 only. So I wish to know from the Honourable Minister, through you, sir, whether the government has taken any steps to audit the different factors responsible for the present situation of excessive emissions, and whether there is any R&D in that behalf. Thank you, Vandana ji. Mani Mantri ji. Sir, this is a very important question raised by the Honourable Member, and I would like to request you and the indulgence of the House in terms of enunciating our plan to address this issue. Certainly the steel sector is known as a hard-to-abate sector.
However, we are not very far in terms of global averages, in terms of our emission numbers, as opposed to what the Honourable Member said. Our current average emission intensity is about 2.55 tons per CO2 per ton of crude steel, compared to about 1.95, which is the average in the world. However, we still have a way to go, and therefore we have put in place a short-term plan, a medium-term plan, and a long-term plan. The short-term plan really looks at reduction of carbon emissions through energy and resource efficiency, renewable energy. The medium-term plan, which is 2030 to 2047, looks at CCUS, which is carbon capture, utilization, and storage, as well as usage of possibly green hydrogen, depending on technology innovations. And the long-term plan from 2047 to 2070 looks at a complete move over from ore-based and coal-based to much more technological innovations to come down to net zero as far as the world is concerned. I'd like to just inform the Honourable Member as well, if you look at this industry, you have to have in place supply-side drivers as well as demand-side drivers to bring down the level of emissions. As far as supply-side drivers are concerned, we've looked at energy efficiency and we've actually achieved a lot. From 2005 to 2022, we have brought down emissions by almost 15%, and our target is to cut it by another 10% by 2030. Because of the steps in this sector, the specific energy consumption has come down from 7 to 6.3 gigacalories per ton of crude steel produced. And the emission intensity also has come down from 3 to 2.55 in terms of the tons of CO2 compared to the total crude steel that is produced. We are also looking at renewable energy as a source, where we've looked at the National Solar Mission, where we hope to cut emissions by 20% by 2030. Resource efficiency is another area. Here we intend to use pellets, we intend to use scrap, we intend to use plastic as a raw material. All these three areas can bring about lowering of emissions. In fact, scrap can lower emissions by almost 85%. So that's another area that we are looking at tremendously. Today, India consumes 26 million tons of scrap. We import 4 million tons, so total 30 million tons of scrap are being used in India today to manufacture steel as we speak, which is roughly about 22.5% of our production. We're also looking at the possibility of green hydrogen when it becomes economically efficient to do so. Today, the prices are way above, as well as carbon capture and storage. On the demand side as well, sir, we are looking at two aspects. One is possibly government mandation of usage of green steel, because almost about 20% of our steel is used in government projects, and whether we can look at government mandation for a small amount of steel production. If we look at roughly 20% of a mandatory limit, I'm giving you an example, at a 30% price premium for green steel, the cost of projects will increase only by 1.26%. So this is an avenue that we're looking at. And finally, raising private demand, raising our awareness as a population, looking at branding green steel inside, eco-labeling, as well as looking at mandating the private sector and ESG rating benefits. Thank you. Thank you, Mandis. Second supplementary. Thank you, sir. The Minister has very articulately put down what exactly the government is doing in that direction, and it's certainly very, very welcome. Sir, I would like to know whether the government also considers to have certain green guidelines for every plant in this behalf. Carbon capture you have already mentioned, but specific use of plastic waste to reduce the coal requirement, using solid waste which is generated as waste at the plants in roads and railway lines, like it's done in many foreign countries, recycling of water and the like, for an environmentally sustainable way of production that can be differentiated, sir, from other coals, so that the government and public sector can use it with a specific mandate till it comes into 100% the supply chain. Thank you, Vandana. Demand chain. Thank you. So again, a very good suggestion for action by the Honourable Member. And let me say this, that it's not easy to mandate a universal formula, if you will, in terms of what is the input material that every plant you should use, because every plant has its own makeup. So for example, you have some plants based on electric arc furnace, you have other
plants that are based on blast furnace or BOF, some that use DRI process with pulverized coal injection. So every plant has its own system. But certainly, as a category, we are looking at raw materials in terms of resource efficiency, and let me just give you a few examples. For example, if we look at the area of pellets and we use 100% pellets, you can almost reduce your CO2 emissions by 10 to 15%. That's example number one. Number two, if you look at scrap, as I mentioned, you can lower CO2 emissions by 85%, and as I mentioned to you, we are using 30 million tons of scrap today in India as we speak. We're one of the countries that are on the forefront of using so much scrap compared to the rest of the world. The third area is plastic, but that can be used as a mixture in terms of the process as opposed to the input. And the fourth, which is very important, is beneficiation of iron ore. If you beneficiate iron ore, if you have a 1% increase in Fe content, you can lower the coke requirement by almost about 1%. And if you lower coke requirement, then you lower CO2 emission as well. Thank you. Sri Anil Agrawal ji. क्या माननीय इस्पात मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में स्टील प्लांट से होने वाले टोटल एयर पोल्यूशन का कितना परसेंटेज स्टील प्लांट से है और इस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। धन्यवाद। एक क्वेश्चन हो गया। माननीय मंत्री जी प्लीज बी ब्रीफ काइंडली, क्योंकि और क्वेश्चंस हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास टोटल एयर पोल्यूशन की क्वांटिफिकेशन नहीं है, पर पर्यावरण मंत्रालय UNFCCC को, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हर 2 या 3 साल अपने आंकड़े सबमिट करते हैं। और जहां तक स्टील का विषय है, जो करीब 95 मिलियन टन CO2 का प्रोडक्शन था 2010 में, 2014 में 154 मिलियन टन तक गया और 2016 में ये 135 मिलियन टन तक गिरा है। थैंक यू। ऑनरेबल पी विल्सन। Honorable Minister, this question may be a little bit different. To tell me what is the status of the Salem steel plant as the complete disinvestment has been taken place, and can you tell whether the valuation has been done and whether the job security of the existing employees has been taken care? Thank you. Yes, this question not related to Air India. But sir, I will try and answer the honourable member because I know it's of interest to him. Yes, I will certainly try and do that. Please. SSP is certainly slated for disinvestment. DPM of the Finance Ministry and my ministry are both, the Steel Ministry are working together on this. We have tried to take our investors to do due diligence and visit the plant. But unfortunately, I regret to inform the House that the state government has not been able to create that security environment for the due diligence by investors to take place. However, we have said that the financial bids and the bids should be submitted. I believe, don't hold me to this, but I think sometime in January. If I stand to be corrected, I will revert you. Not, Honorable Sri Ajodhya Rami Reddy, nothing. Manya Ajodhya Rami Reddy. Sir, EU has recently released the Carbon Border Adjustment Mechanism, which directs that goods imported from a high-polluting country will face a levy at the border based on its emission footprints. With the India exporting 20-25%, please be brief. Yeah, please. With India exporting 25% of their steel production to the EU, how will this impact our steel industry, and what steps the government is taking to address this issue? Thank you. Sir, as far as environment concerned, this is an issue that affects the steel industry worldwide. I am also pleased to report to the House through you, sir, that India has now reached a new record. We have become the second largest steel producer in the world in the last 8 years, doubling our capacity from 150 million to 154 million tons worth of production. We are very, very aware of the environmental concerns across the board. This affects producers all across the world, and which is why I have enunciated in this House a very clear articulation of both the supply side and the demand side plans that we have in place to reduce CO2 emissions in the steel sector, because without a doubt, this is the way the world is going, and steel has to conform to that path of environmental protection. Thank you. Question number 122, माननीय संजीव अरोरा जी। माननीय मंत्री जी।
माननीय मंत्री जी उत्तर सभा पटेल पर रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय संजीव जी। सर माइक। फर्स्ट सप्लीमेंट्री पहला सवाल। Honorable Chairman, sir, I would like to ask Honorable Minister through you that how come Amritsar and Chandigarh airports were not pushed while signing agreements when everyone knows that maximum Indian population is from Punjab, especially in Canada, and the agreement was with Canadian. Thank you. Sir, I would like to respond to the honourable member who's asked the question, as well as the honourable member who raised this issue in 0R, Raghav Chadda ji. Let me be very clear, sir, that India has to look after her own interests. And the fact of the matter is that in the past governments, we have been way too liberal in terms of signing our air service agreements and giving multiple points of call to our neighbors very close to our geography. Whereas if you look at the situation today, sir, especially as far as Amritsar and Chandigarh are concerned, the honourable member in 0R also had raised, it's absolutely untrue, the statement that he has made. I'd like to place that in front of the House, that there is no connectivity in Amritsar, Chandigarh. I would like to inform him as well as the House that today we have connectivity, international connectivity from Amritsar and Chandigarh to almost 7 countries: United Kingdom, Qatar, Dubai, Malaysia, Sharjah, Singapore and Italy. As far as Amritsar is concerned, we have 17 air traffic movements per week internationally, specifically to Singapore, Doha and Kuala Lumpur, as well as to Tbilisi and to Malposa, Milano. As far as our domestic carriers are concerned, we have 42 air traffic movements internationally in Amritsar and Chandigarh together. 33 in Amritsar, 9 in Chandigarh, connected to London, Birmingham, Dubai, Sharjah, Rome and even Bergamo. So this is the length and breadth of wide connectivity. Certainly in our air service agreements, we only give connectivity to 6 metros in India, because in response we hardly get 1 or 2 points of call in those countries. So certainly we cannot open up our country to them. We must also strengthen our Indian carriers, the concept of Atmanirbhar Bharat, and I'm very pleased to report to this House that now our Indian carriers are getting wide-bodied aircraft. We are going to go long haul. We are going to put our Indian flag across the world in terms of direct connectivity. And I have great confidence in our Indian carriers to be able to provide that service, and certainly Punjab will be a very key element of that. Thank you. Second supplementary, Mani Sanjeev ji. Sir, my question was particularly regarding Canada, but anyway, my second supplementary is, my question to Honourable Minister is, when will Udan flights start again to Punjab, which were stopped before COVID? Now, why this has connection with Canada? Thank you. No, let me explain, sir. Why Be this brief, has, sir. Why this has connection with my earlier question? I am just telling you that. Please allow me. You come to the next question, please. No, this is next question. Yes, put it. So if the Udan flights are restarted after COVID, at least the people coming from Canada and other countries, they will have connecting flights. So they were closed during COVID and they have not been started, especially Ludhiana. Please be brief in your question, Mr. Arora. Next question. Please, thank you. Mani Mantri. Sir, as we, very important suggestion for action as well as a point by the honourable member, and let me apprise him that Amritsar has, and Chandigarh both, have tremendous connectivity throughout India. We have domestic connectivity, and as far as the Udan flights are concerned as well, sir, the Udan flights are functioning, which had been given. Some of those flights post 3 years are no longer functioning, but we are awarding new routes under Udan 4.2 as we speak. Thank you. Mani Bhuneshwar Kalita ji. Question relates to India and Canada flights. Yes, I will be on that point, sir. My supplementary arises from the Honourable Minister's reply, where he says the Indian airlines are allowed unlimited direct connectivity from any point in India, including Amritsar and Chandigarh, of course. So my supplementary to Honourable Minister is whether Indian Airlines flights will give connectivity to Guwahati Airport, which is the only major airport. This question relates to, yes, sir. Relates to India and Canada, please. But my supplementary arises from the reply of the Minister, and whether any Indian Airlines flight will be introduced
from the Guwahati airport, Thank which you. is the only major airport in Thank you, Northeastern Kalita ji. India. Thank you. Thank you. I put your question. Sir, as we are aware, sir, the civil aviation sector is a deregulated sector, and the decisions are made by the airlines based on their possibilities of passenger load factor as well as economic issues. If the member comes and meets with me and has a cup of tea or coffee with me, we can discuss it, and I'll certainly pursue it. Thank you. Dr. V. Sivasan. So question is for Canada. Yes, Canada and yes, sir. India Yes, and Canada. Sir, Please. Canada and Canada same. Sir, now in India, air travelers are facing huge problems. Look, many kind of problems. First one, skyrocketing fare of air travelers. So these airline companies are exploiting the common people in different ways. So they are exploiting the people without any norms and regulations. Here, my question is, sir, in India, some sectors, they are charging for a short journey, they are charging about 25,000 rupees, sir. So here the question is, doesn't the government some sort of regulations is needed to bring a method into this madness? This is my question, please sir. cooperate the chair. ये हाउस ने रूल्स बनाए हैं कि संबंधित सवाल से संबंधित ही सप्लीमेंट. Please, let me move to Props. माननीय मंत्री जी अगर जवाब देना चाहते हो तो आप दें. Yes, sir. So I would want to respond, sir, because I think it's members' right to ask a question, and it's my responsibility to respond to the members. Sir, I think it's extremely important to understand that the civil aviation sector is a seasonal industry. There are crests and there are troughs. When festive season starts in October, all the way up till February is the high season of civil aviation. You then get into a little bit of a medium lull situation, and then the trough, which is the monsoon season, is really a wipeout season in terms of civil aviation is concerned. So there will be, because of seasonality factors, there will be pricing differences. Point number one. Point number two, sir, we also have to understand that the civil aviation sector has gone through possibly the worst time of any industry in the world during COVID. It was the only industry in which our planes were pretty much on the tarmac for almost 18 to 24 months. And the very fact that we've experienced a V-shaped recovery speaks great volumes of the resoluteness of our carriers and the capability to supply that service to our common man. ATF, which is a very important ingredient as a raw material, air turbine fuel, almost close to about 50% of a carrier's cost structure, has gone up from pre-COVID between 35,000 to 40,000 rupees a kiloliter to today's level of 1,17,000 rupees a kiloliter. So there's been almost a 2.5x jump in the main raw material in your cost structure, which comprises of almost 50%. That too has an effect on fares. And finally, sir, the civil aviation sector functions on what is called as a reservation bucket designator, RBDs, where if you book very far in advance, you will get very, very low fares. But as the plane keeps filling up, the fares certainly do go up, and that is an international practice that is followed all across the globe. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha. Professor Manoj Kumar Jha. माननीय उपसभापति महोदय, मैं पहले ही माफी मांग लूं इससे पहले कि आप कहें, ये प्रश्न संबंधित है माननीय मंत्री जी की मौजूदगी से, सवाल से संबंधित नहीं है. मेरा आपके माध्यम से कहना, माननीय मंत्री जी, आजमगढ़ में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के क्रम में हजारों किसान अपनी जमीन ना देने के लिए 2.5-3 महीने से बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई संवाद नहीं हुआ है. आप कोशिश करें संवाद हो और रिजॉल्व किया जाए. धन्यवाद. शुक्रिया. सुझाव है, माननीय मंत्री पर निर्भर करता है कोई जवाब देना चाहे. अध्यक्ष महोदय, जरूर साहब आएंगे और हमसे मिलेंगे, हम जरूर बैठ के तहकीकात करेंगे. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 123, माननीय श्री धीरज प्रसाद साहू. माननीय धीरज प्रसाद साहू. हाँ, माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 123. पहला सप्लीमेंट्री, माननीय धीरज जी. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के स्तर पर तथा बोकारो स्टील बर्नपुर एलाय दुर्गापुर चंद्रपुर से समिति सदस्यों का चयन सेल कर्मचारियों के बीच नहीं करने की वजह क्या है? माननीय मंत्री जी. सर, हमारे 8 संयंत्र हैं और इन 8 संयंत्रों में से कई संयंत्रों में हमारे यूनियंस और मजदूर संघ
रजिस्टर्ड और एफिलिएटेड हैं, कई में नहीं। और इसका कारण मैं हमारे सांसद महोदय के समक्ष भी रखना चाहता हूं। भिलाई स्टील प्लांट पे भिलाई इस्पात मजदूर संघ एक रेगनाइज्ड यूनियन है। रूरकेला स्टील प्लांट में रूरकेला श्रमिक संघ इंटक के साथ जो एफिलिएशन रखता है वो उसे मान्यता मिली है। सेलेम स्टील प्लांट में सेलेम उरुकाल थोजिलालार मुनेत्रा संगम LPF को मान्यता मिली है। और VIS विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट में VISL वर्कर्स एसोसिएशन को मान्यता मिली है। इसके अतिरिक्त सर 4 ऐसे हमारे संयंत्र हैं जहां मान्यता नहीं मिली है। दुर्गापुर स्टील प्लांट में क्योंकि वहां चुनाव आयोजित नहीं किए गए, क्योंकि वहां एक विषय पर आदान प्रदान भी है और एक सबजुडिस मैटर भी है। और यही स्थिति बोकारो स्टील प्लांट की है, जहां बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन को मान्यता दी गई थी, पर अब एक मैटर सबजुडिस है, लीगल मैटर हो गया है, इसलिए वहां चुनाव नहीं हो पाए। और यही स्थिति इसको में है और एलॉय स्टील प्लांट में है। धन्यवाद माननीय मंत्री। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय धीरज जी। बोकारो इस्पात संयंत्र बनपुर दुर्गापुर चंद्रपुर फेरो एलाय प्लांट में 1947 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत सीक्रेट बैलेट इलेक्शन के आधार पर समिति सदस्यों का चुनाव क्यों नहीं किया जा रहा है? धन्यवाद। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था और आपके द्वारा माननीय सांसद जी को भी निवेदन किया था कि ये मैटर सबजुडिस है, क्योंकि वहाँ लीगल केसेस चल रहे हैं, तो इस पे हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। धन्यवाद। माननीय GVL नरसिम्हा राव। Thank you, sir. Sir, this is about executive and non-executive employees working in RINL, Visakhapatnam Steel Plant, sir. Among the 5,200 executives working, about 300 are retiring every year. Similarly, among 10,000 non-executive members working in Visakhapatnam Steel Plant, about 900 are retiring every year. And since 2019, there has not been any recruitment. So also, there is a freeze on promotions and increments for employees, which has a very limited cost to the company, sir. So my request to the Honorable Minister, whether he will examine all these factors and try and lift the freeze on both freeze on recruitment and also provide increments as demanded by the employees. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। Sir, according to the rules, sir, there has to be a level of profitability for the past 3 years before the increments are given with regard to CPSUs. And this is the reason, as an example, I'd like to inform the honorable member, sir, that in the first 3 years, as far as sale is concerned, 14, 15, 15, 16, and 16, 17, because of it was making losses, therefore that wage revision could not take place for executive or non-executive. In the last 3 years, SAIL has become a profit-making company, and therefore we have executed the wage revision, increase in wage revision, both for executive and non-executive employees. The question very clearly is on SAIL. We have put in place, as I mentioned, across all CPSUs. The current question is on SAIL. As far as RINL is concerned, it will have to be seen whether it comes under this clause of 3 years profitability. If it does not, then certainly that wage increase at this point, according to the rules, cannot be given. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। दोला सेन जी। Deputy Chairman साहब, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि why memorandum of understanding not yet signed for SAIL workers wage revision at RINL 2, and as there are lacks of huge of workers beyond the central trade unions, why the central SAIL management do not restructure the NJCS committee considering the objective reality, and whether the central government and ministry has done any survey to know how many vacancies there in the PSUs like SAIL, how to fill it, and why the overqualified numbers are applying for jobs in government departments. Thank you. We have put 2 questions, please. Thank you. Sir, the honourable member has raised 2 very pertinent issues. One is regarding the
fitment process as well as the salary revision and the resources being given to our workers, I'd like to inform her through you, sir, that as far as SAIL is concerned, we have actually signed the MOU with regard to executive employees as well as non-executive employees, both with regard to the new fitment. And I'd like to inform her through you as well, sir, that as far as the non-executive employees are concerned, it's been a 5-year cycle. The 2 cycles ago in 2007, wage revision was executed, then in 2012, and now as of 2017, the wage revision is being executed. But as far as the executive employees are concerned, it's only been done once in the last 10 years. So there's a 10-year cycle for executives, but a 5-year cycle for non-executives. And as far as we are concerned, at this point of time, 667 crores have been already dispersed to 11,000 executive employees, and 1,000 crores has already been dispersed to 56,000 employees of SAIL. So that has already been in place. The second question she raised was with regard to the composition of the NJCS. Through you, I'd like to also inform her, sir, that we have 12 representatives from our PSUs, 2 from SAIL and 1 each from Bhilai ISP, Bhilai, Rourkela, Durgapur, Bokaro, ISP, ASP, SSP, VISP, CFP, as well as the Director of Personnel or RINL. And as far as our unions are concerned, there are almost 25 representatives. So the weight is given to the workers and to the unions. 3 representatives each from INTUC, C2, ITUC, HMS and BMS, and 1 representative each from the unions of Bhilai, Durgapur, Rourkela, Bokaro, Burnpur. And as far as the SSPs are concerned, 1 rep each from Durgapur, Salem, our Bhadravati, Chandrapur, Fero, as well as RINL. Thank you. माननीय ऑनरेबल P. Bhattacharya ji. Sir, I have a very pertinent question. For increasing the quality of the production, all the steel factories in our country, whether government has any planning of start any tripartite discussion with the central trade union leaders. Thank you. Steel production in the country has increased at a historic level. In 13-14, we had only close to about 60 million tons per annum production of steel. We are today at 120 million tons. In terms of capacity, we had only 75 million tons. We are today at about 154 million tons. So there's been a doubling in the last 8 years of steel production in the country, which has been historic, and which is why we've become the second largest steel producer in the world today, sir. It's very important that India, the second point I'd like to make is very important that India continues on this trajectory of growing capacity of steel production, because we have a tremendous amount of infrastructure projects. And therefore, it is our target that by 2030, we intend to double our steel capacity from 150 to 300 million tons. SAIL 2 will be a part of that. SAIL's current capacity is 19.6 million tons. We're going to grow SAIL's capacity to 33 million tons by 2030, and Bokaro Steel Plant's capacity is 4.6 million tons, which will go to 8.6 million tons. Thank you. Question number 124, Srimati Ranjit Ranjan ji. Question number 124. Thank you. Mani Mantri ji. Sir, statement is laid on the table of the House. First supplementary. सर उप सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री साहब से पूछना चाहती हूं कि अगर आप देखें तो जो कोयला खदानें अभी विकसित हो रही हैं, उनमें से कम 165 गांव को विस्थापित करने और लगभग 87,630 परिवारों को प्रभावित करने का खतरा है, जिनमें से 41,508 परिवार उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां प्रमुख आबादी आदिवासियों की है। इसमें लगभग 22,686 हेक्टेयर कृषि की भूमि और 19,287 हेक्टेयर जंगल को भी खतरा है। ऐसे में देश की खदानों में हम सिर्फ 2/3 क्षमता का उपयोग कर पा रहे हैं। कुछ बड़ी खदानों में सिर्फ 1% ही क्षमता का उपयोग हो रहा है। क्योंकि मैं आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो नई खदानों में हमारे लाखों आदिवासी भाइयों, सर उसी में आ रही हो, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जल, जंगल, जमीन, रोजी रोटी का सवाल है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि आज जो मौजूदा खदानें हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए? धन्यवाद।
Sir, basically, I do not agree the so-called report what she is mentioning. That report is neither credible nor reliable. See, that has calculated on the basis of जो कोल इंडिया और हमारा PSU के पास जो हमारे कोयले के खदान है उसके लिए कैलकुलेट किया है 328 लगभग हमारे पास 328 माइंस है इनटू PRC। तो PRC सभी इसमें अचीव नहीं होता है जी। PRC कभी कभी वेदर के कारण, लैंड एक्विजिशन कारण, नॉन वायबिलिटी के कारण, फॉर द वेरियस रीजन, एंड कभी कभी PRC अचीव ही नहीं होता है। तो इसके कारण ये जो कर रहे हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल रिपोर्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द क्वेश्चन ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हमको हमारा एनर्जी सिक्योरिटी को देखना है। एंड जहाँ तक सवाल है हमारा, जहाँ तक सवाल है प्रोडक्शन का जो सवाल है हमारा प्रोडक्शन था इन 14 इट वाज 566 मिलियन टन। इस बार हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, दिस ईयर आवर टोटल प्रोडक्शन विल बी 900 मिलियन टन। दैट मीन्स ऑल आवर PSUs they are using optimum, they are producing to the optimum level. For example, Coal India average is around 85%, ACCL is around 90%, and Neyveli Lignite Corporation, where we have given them the coal mines also, and including lignite, there is almost nearly 100%. So in last, and our requirement by 2030 will be 1,500 million ton. For that we have to scale up our production. For that, the previous regime, they did not produce. There was only scams. And today we are producing and we are ensuring the energy security for India. For that, coal is needed. That is what I would like to mention. And that report, which they are mentioning, it is neither credible nor reliable. I am very clear on this. Thank you. Second supplementary, Ranjita ji. सर उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, मैं उनको ऑथेंटिक डेटा लाके दूंगी। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, 2021-22 में भारत का कोयला आयात 208.93 मिलियन टन था, जिसकी कुल कीमत 2.28 लाख करोड़ रुपए हुई। वहीं 7 सितंबर महीने तक कोयला आयात करीब 132 मिलियन तक पहुंच गया है, जिसकी कीमत 2.3 लाख करोड़ पहुंच गई है। तो मैं आपकी सरकार से, आप आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी इतने बड़े स्तर पर कोयला का आयात कर रहे हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि भारत में कोयले के मामले में कब तक, किस साल तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? दूसरा, इसके साथ ही है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। सर मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। हाल ही में सर मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। सवाल एक ही सवाल 2 साल में एक तो क्वेश्चन आता है सर। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये, माननीय मंत्री जी प्लीज, नो नहीं, एक व्यक्ति 3 सवाल नहीं पूछ सकते। हमारे पास और नाम है, माननीय सदस्य जिनको मौका नहीं मिलता, आप मेरे पास आते हैं, अगर एक व्यक्ति 3 सवाल पूछेंगे, प्लीज सवाल आप 3 पूछेंगे एक साथ नहीं, प्लीज सर बड़े-बड़े बातों के बारे में बात नहीं, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, प्लीज बी क्लियर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आस्क ओनली 2 सप्लीमेंट्री रंजीता जी। जो छोटे-छोटे बात करते थे, इनका प्रोडक्शन क्या था? इनका प्रोडक्शन था 566 मिलियन टन। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, प्लीज माननीय मंत्री जी। आई एम रिप्लाइंग, इफ शी अलाउज आई विल रिप्लाई। प्लीज नहीं, आई विल नॉट, प्लीज आप जवाब दें सर। आप जवाब, जो बड़े-बड़े बातों के जिक्र कर रहे हैं, हमने बात नहीं किया है, बात तो हमने जो किया है हमने करके दिखाया। माननीय सदस्य, आपको 2 सवाल पूछने का मौका है, आप 3 सवाल पूछ रहे हैं। नो, आई विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट, प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो, प्लीज ब्रीफली आप मंत्री जी जवाब दें, आई विल मूव टू इट। प्लीज आप ब्रीफली जवाब दें, प्लीज सर, प्लीज आप माननीय मंत्री जी, प्लीज माननीय मंत्री जी प्लीज जवाब दें आप। आई विल मूव टू नाउ, आई विल मूव टू अदर क्वेश्चन नाउ। सर, कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम है सर, प्लीज, दे डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन आवर एजेंसीज, दे डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन आवर आर्मी,
They do not have trust on our प्रधानमंत्री सवाल पे जवाब प्लीज This is the situation. They are trying to rely on a report. माननीय मंत्री जी प्लीज जो एक विदेशी संस्था माननीय मंत्री जी प्लीज जो एक विदेशी संस्था एक रिपोर्ट करती है और वो रिपोर्ट में ये कहती है हमारा जो खदान है उसका पूरा उपयोग नहीं होता है, तो हम ये कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हम स्टैटिस्टिक्स के साथ कह रहा हूँ. Sir, I will complete, sir. This is a very important question she has raised. Please complete. And whatever she has raised, I have already told, average 90% from each of the mine, we are utilizing almost 90% of its capacity. Thank you. And Thank you. And our production will be 900 million ton, and next year it will be 1 billion ton. Thank you. Sir, let me complete, sir. During their time, it was the Koila was under this regime of scam. Our regime, under the Prime Minister Narendra Modi ji, I would like to assure this house, sir, let me last sentence. I will assure house from 24-25, we will stop the import of the thermal coal. This is what I am going to assure to this house. माननीय कृष्णलाल पवार, Dr. Sasmit Patra, please. Honorable Deputy Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity to ask a very specific question on Odisha, sir. Sir, I'd like to first thank the Honorable Minister that today Odisha is one of the largest states which is producing the most of coal in the country. And Mahanadi Coalfields is also doing a tremendous job in Odisha. Sir, I'd like to know that in terms of Odisha, what are the specific plans, programs that the Honorable Minister has in terms of maximizing capacity, utilizing capacity of coal in the state of Odisha so that that becomes the largest coal-bearing and coal extraction state in the country? धन्यवाद. Sir, I am thankful to Honorable Member Shri Sasmit ji because the Odisha, they are by and large, they are cooperating as far as both the other mining sector also and the coal is also. And I would also like to, we had a long discussion with the Odisha government as far as the mining is concerned and coal mining is also concerned. Many suggestions we received from them. After receiving those suggestions and having a lengthy discussion with them, we have also changed certain things and they have also changed certain things, the process in the state of Odisha. By that, overall the production, which was around 60-65 million ton in 2014, today it has almost reached 170 million ton. And I am going to assure Mahanadi Coalfields in coming a year or two, maximum a 1.5 year, we are going to achieve 200 million ton per year. This is the plan we have, and the detail I will share with you because this is royalty will increase. And royalty, entire royalty, whatever, and also I would like to tell, sir, during the previous region, it is given an allotment through a chit route, means by a slip route. Now we are auctioning it. Most transparent system of auction. पहले कौन सा ऑफिस से चिट्ठी आता था और किसको अलॉट होता था ये सबको पता है, इसलिए स्कैम बन गया. वो स्कैम के कारण सर अभी क्या हो रहा है, अभी हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम में ऑक्शन कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में ऑक्शन के कारण स्टेट का रेवेन्यू बढ़ रहा है. ये स्टेट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, स्टेट स्ट्रेंथन हो रहा है. स्ट्रेंथन होने के कारण ये लोगों को इनको थोड़ा तकलीफ हो रहा है क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है. थैंक यू. माननीय नीरज गांगी जी, your question. माननीय नीरज गांगी, आपका सवाल. Thank you, Chairman, sir. Through you, sir, I would like to ask Honorable Minister of Coal that nearly 90% of the proposed coal projects in terms of capacity will be located in the high-risk water zones, which will worsen the water shortages in the region. What steps will the government take to mitigate the potential water crisis due to new coal projects in these regions? Thank you.
Thank you, sir. I may be kindly allowed to speak in detail, sir. Environment impact assessment and EMP is also prepared on each project based on the project-specific terms of reference recommended by Ministry of Forest and Environment Clearance, which requires a detailed hydrology and hydrogeology impact assessment management plan based on which EC is granted, sir. Subsidiaries of the CIL are in a process of obtaining no objection certificate for abstraction of the groundwater for each of the product from the central government water authority, Ministry of Water Resources of Government of India. Advance payment of fee is ensured for each project for abstraction of the groundwater. Clearance is granted based on the detailed hydrological report and the groundwater. तो इसीलिए ये सब हम जो करते हैं, इसके साथ ही साथ जो माइन करने के बाद पानी निकलता है, वो पानी एक तो हम हमारे माइनिंग के लिए ही यूज करते हैं, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं CIL के देता हूं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द CIL इज टू अटेम्प्ट द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द माइन वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द फॉर द कम्युनिटी यूज. In 2021 and 2022, out of the total 6,440 some LCQM average mine water discharge, 2,591 LCQM of mine water was utilized for own use, and 2,826 LCQM water was utilized for the community supply. That is for some is potable, and some is for irrigation, and some is for plantation. Thank you, Mantri. Means the entire water is used, and also plantation is being done, and also we are taking the permission from all the concerned authorities so that there will not be impact of the water on the concerned area. Thank you. Saroj Pandey ji. धन्यवाद उपाध्यक्ष जी. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो कोयला खदानों का परिचालन होता है और जो राज्यों में स्थापित है, उन राज्यों में जो केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों पर राज्य सरकार द्वारा अनाधिकृत तौर पर उन पर दबाव डाला जाता है और अनैतिक कार्यों के लिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी लगातार ये घटनाएं क्रम हो रही हैं, तो वहां पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में जो घटनाक्रम अभी घटित हुआ है कोयला के खदानों को लेकर, और जिसको लेकर बार-बार ये विपक्षी दल उद्वेलित होते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ खदानों का क्या विषय रहा है. प्लीज सर, तो दबाव डालने का इधर उधर कोशिश तो होता है, लेकिन कई स्टेट में तो ऐसा होता है. लेकिन भारत सरकार इसमें स्पष्ट है. प्लीज हम प्लीज तो लेकिन मंत्री जी आपकी जहां भी ऐसे कंप्लेंट आता है, भारत सरकार इसके एकदम सख्तता से कार्रवाई करते हैं. इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, द टोटल जो सिर्फ हमारे PSU के साथ था कोयला प्रोडक्शन, उसके कारण हमारा टोटल प्रोडक्शन नॉट इवन it was sufficient for the 50% of the requirement. Now, because we have completely stopped, the scam regime has been totally stopped. तो ये scam regime बंद होने के कारण टोटल हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ऑक्शन करके प्राइवेट लोगों को लाके, प्राइवेट लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करके देश का जो नीड है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कोयला का रिक्वायरमेंट हम पूरा करने जा रहे हैं. इसीलिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट which believes in transparency, and we believe in that, and we are committed to that. Thank you. Question number 125, Honorable P. Sri Santosh Kumar P. Question number 125. Maanniya Mantri ji. Table, sir. First supplementary. Sir, there are around 40% of the Hajj pilgrims are from northern side of Kerala only. Sir, the government of Kerala already demanded to make it a Hajj embarkation center. And you might be knowing that there are 8 members of parliament from the same district, including the minister who is sitting next to you. So my question is that will it be operational by 2023? I mean the Hajj embarkation center in Kannur airports. Thank you. Sir, as far as the Hajj embarkation is concerned, sir, we are not the nodal ministry. The nodal ministry is the Ministry of Minority Affairs.
based on the decision that the Ministry of Minority Affairs takes with regard to Hajj embarkation points. That decision is notified to us, and we are only the operational side in terms of providing the necessary processes. If the honourable member can certainly raise this issue with the Minority Affairs, and if he so likes, I can also pass it on from his side to the Ministry of Minority Affairs. Thank you. Second supplementary. So as it is described now, there is a detailed picture of the Kannur airport. So I would like to ask you one question. So it is up to the airlines to provide air services to and from any airport in the country depending on their operational and commercial viabilities. So this means now airfares are being determined by the companies. Now the operations are also being decided by the companies. So this will lead to total catastrophe. All these airports have spent crores of rupees, and if the government is not going to intervene in this issue, this will be a serious loss to the nation. So I request you to change the policy. Is there any chance of changing your policy? Thank you. So the whole concept of deregulating a sector means you allow for market forces to decide. Now, the honourable member is asking the question whether we need to re-regulate a sector that we have deregulated. I certainly believe, sir, that the airlines are providing a yeoman service in terms of contributing to the transportation sector in our country. I can very well understand the honourable member's concern with regard to connectivity, and I would like to apprise him that as far as Calicut is concerned, we have 332 air traffic international movements to almost 14 cities. As far as Kochi is concerned, we have 564 air traffic movements per week to 16 cities. As far as Kannur is concerned, we have 130 air traffic movements to almost 11 cities. Thiruvananthapuram, we have 220 air traffic movements per week to almost 13 cities. Thank you. Please. राम भाई मुकेरिया, ये सवाल सिर्फ कन्नौर कालीकट एयरपोर्ट का है, इससे आपका संबंधित सवाल है? बंदर का है। प्लीज नहीं, तो मुझे अगले सवाल पे जाने दीजिए क्योंकि बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं। प्लीज, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। एयरपोर्ट्स की ऑपरेशंस पर नहीं, आपका सवाल कन्नौर कालीकट एयरपोर्ट से संबंधित है? नहीं, हमारा एक आदमपुर पंजाब में एयरपोर्ट है और उसमें से 4 बंद पड़ी हुई है, उसमें से 4 बंद। नो प्लीज लेट मी। सर, इसके उत्तर में उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का जिक्र किया गया है, तो उससे संबंधित आपका कन्नौर कालीकट से जुड़ा सवाल है तो मैं मौका देने को तैयार। हरियाणा के एयरपोर्ट से जुड़ा। तो प्लीज बैठे। क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमती ममता मोहंता। 126 प्लीज, माननीय मंत्री जी। Sir, answers laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री। धन्यवाद वाइस चेयरमैन सर। आरसीएस उड़ान के चतुर्थ पर्याय के अधीन में 2020 में देश के रिमोट और रीजियोनल स्थान में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए 78 नया रूट को अनुमोदन किया गया था। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि ये नया रूट में ओडिशा के कोई सेक्टर शामिल है या नहीं, अगर नहीं है तो क्या कारण है, और क्या सरकार कोई नया रूट प्रस्तुत कर रहे हैं? थैंक सर, जहाँ तक उड़ीसा की बात है सर, वी हैव 22 ऑपरेशनलाइज्ड रूट्स वर्तमान में, और हम लोगों की कोशिश है कि आने वाले समय में 16 ऐसे रूट्स हैं जिसमें से 14 रूट्स में हमारे 2 एयरपोर्ट अभी जल्द तैयार होने वाले हैं, और 2 रूट्स के लिए एयरलाइन अभी वो रूट्स चला नहीं पा रही है। लेकिन हमारी कोशिश है कि आने वाले अवधि में भी उड़ान 4.2 के तहत 184 रूट्स हम लोग ने अधिक दिए हैं, जिसमें से करीब 16 हेलीकॉप्टर रूट्स हैं, 50 हमारे सी प्लेन रूट्स हैं, और करीब 119 हमारे फिक्स्ड विंग के रूट्स हैं, और आने वाले समय में भी उड़ीसा को हम लोग प्राथमिकता जरूर देंगे। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। सी उड़ान योजना के अंतर्गत कितने एयरपोर्ट कवर हुआ है? क्या इस योजना का और विस्तार करने का कोई योजना है? अगर है तो कौन सी राज्यों के कितने ट्राइबल जिला में इस योजना को लाभान्वित करेंगे?
सर, उड़ान योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि उड़े देश का आम नागरिक। और इसी योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में 2016 में इसकी शुरुआत हुई। करीब 2,15,00,000 नए फ्लाइट्स उड़े हैं सर, और इसके साथ 1,15,00,000 लोग जिन्होंने कभी भी प्लेन में सफ़र नहीं किया हो, केवल खेत में खड़े होकर प्लेन को देखा हो, ऐसे लोगों ने सफ़र किया है सर। तो ये उड़ान योजना की महत्वपूर्णता है देश की विकास और प्रगति में। और 11 एयरलाइंस इसके भाग हैं, जिसमें से 3 नए स्टार्टअप्स भी हैं। 70 नए एयरपोर्ट बने हैं सर, ऐसे जगह में जहां एयरपोर्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण रूप से मिटाए गए थे, वहां एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं, चाहे वो दरभंगा हो, रूपसी हो, किशनगढ़ हो। अनेक ऐसे स्थान हैं जहां 15,000 से 2.5 लाख से 3.5 लाख यात्री प्रतिवर्ष आज उन एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं। और आने वाले सालों में जो 70 एयरपोर्ट्स हमारे बने हैं, उसके अतिरिक्त हम लोग 68 नए एयरपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं 2024 के अंत तक, ताकि एक विस्तृतीकरण नागर विमानन का क्षेत्र का हो और एक गहराईकरण भी नागर विमानन क्षेत्र का हो। रजनी पाटिल जी। धन्यवाद सर। उड़ान स्कीम के अंतर्गत अभी मंत्री महोदय ने सब जानकारी दे दी। मैं आपके द्वारा पूछना चाहती हूँ कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में जहाँ पर ऑलरेडी एयरपोर्ट्स मौजूद है, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में नांदेड़, वहाँ पे विगत 2-3 साल से हवाई सेवा चालू नहीं है। तो जो जहाँ पे लागत गवर्नमेंट की लगी है, पैसा लगा है सरकार का, वो तो बंद है और हम नए शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए सरकार कुछ करेगी? धन्यवाद। नांदेड़ में हमने फ्लाइट कनेक्टिविटी की शुरुआत की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो एयरलाइन ने वो रूट बंद कर दिया है। हमारी कोशिश है और आने वाले उड़ान 5.0 में भी हम नांदेड़ को जरूर प्राथमिकता देंगे, क्योंकि नांदेड़ एक ऐतिहासिक स्थान है, केवल महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन राष्ट्र के दृष्टिकोण से हमारे सिख समाज के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और प्राथमिकता हम जरूर देंगे, ये विश्वास में। धन्यवाद। श्रीमती कांता करदम जी। धन्यवाद सर। सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस योजना के तहत चालू हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा उड़ान तहत प्रचालित RCS मार्गों एक सवाल पूछ और चुकी हैं हवाई कांता अड्डों जी, का एक सवाल हो चुका आपका, सहित प्लीज राज्यभर विवरण क्या है? प्लीज धन्यवाद एक ही सर। सवाल। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे भारतवर्ष में 2013-14 तक केवल 74 हवाई अड्डे स्थापित थे, और इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता के आधार पर आज 71 नए हवाई अड्डे, वाटर एयरड्रोम और सी ड्रोम हमारे स्थापित हो गए, 145 स्थापित हो गए। और सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5-6 सालों में जो ये 74 से हमारी सफ़र रही है 145 तक, ये सफ़र जारी रहेगी और 200 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और इसी के साथ जहां हम लोगों के प्लेन की फ्लीट की बात है, जो केवल 400 तक सीमित थी 2013-14 पे, वो आज 700 पर आ गई है, और हर वर्ष 100 से 125 प्लेन्स की एक्विजिशन होगी, और आने वाले 5 साल के अंदर 1200 के आंकड़ों को भी हम लोग पार करेंगे, ये विश्वास है। धन्यवाद। माननीय इमरान प्रताप गढ़ी। माननीय इमरान प्रताप गढ़ी। सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि सरकार का नारा था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो है वो हवाई जहाज का सफर करेगा। इन दिनों प्लीज सवाल हवाई समझ लें, कुछ भी समझ लें, हर प्लीज। चीज पे टोका टिप्पणी करना सर नहीं, प्लीज आप उनको भी मना करिए, सत्ता नहीं, पक्ष मैं को। सबको मना कर रहा हूं। मेरा अनुरोध यह है सर, और प्रश्न मेरा यह है कि इन दिनों जब भी थोड़ा सा यात्रा का अनुपात बढ़ता है, टिकट इतने ज्यादा महंगे हो जाते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। 5,000 का टिकट 20-20, 25-25 हजार तक में बिकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी के पास इस तरह का कोई इसको लेकर के उपाय है प्राइवेट एयरलाइंस को कंट्रोल करने का, कि कम से कम टिकट जो है वो सस्ता रह सके और आम यात्री जो है वो हवाई जहाज का सफर कर सके? सर, मैं सांसद महोदय को सूचित करना चाहूंगा आपके द्वारा कि शायद इनके वायर्स क्रॉस्ड हो गए हैं। ये मिक्सअप कर रहे हैं उड़ान योजना और साधारण टिकटों के आधार पर। उड़ान योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग के मैकेनिज्म के तहत सस्ते टिकट दिए जाते हैं, ताकि उस रूट को हम लोग वायबल कर पाएं, और उसी के आधार पर 1,10,00,000 लोग इस देश में हवाई सफर कर पाए हैं सर, जिन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी।
तो जहां तवज्जो दिया जाना चाहिए मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय को, तवज्जो देनी चाहिए उनको। जहां तक उन्होंने विषय उठाया है कि टिकट के दाम बढ़े हैं, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और इसका विस्तृत उत्तर मैंने पहले प्रश्न में कहा था कि हमारे सेक्टर में दो प्राथमिकता से दो फैक्टर होती हैं। एक सीजनैलिटी की फैक्टर होती है, एक लीन सीजन होता है जहां टिकट के दाम कम होते हैं, एक हाई सीजन होता है जहां टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। और ये केवल भारत में नहीं है, ये विश्व स्तर पे ये स्थिति होती है। और आज हम लोग वो हाई सीजन में चल रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, एक डेजिग्नेटेड बकेट्स होते हैं टिकट के। तो अगर हम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, अगर एडवांस में हम लोग बुकिंग करेंगे तो आपको लोएस्ट फेयर से भी कम मिलेगा डिस्काउंट पे, 2000-3000 पे। पर अगर आखिरी दिन पे हम लोग टिकट बुक करेंगे तो वो फेयर जरूर बढ़ जाते हैं। और तीसरा मुद्दा जो आपके समक्ष मैंने सर रखा था कि एयर टर्बाइन फ्यूल का कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो 53,000 रुपए प्रति किलो लीटर था प्री कोविड, वो अब 1,17,000 रुपए प्रति लीटर हो चुका है वर्तमान के समय में, जो 50% हम लोगों की इनपुट कॉस्ट एयरलाइंस की होती है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 127, ऑनरेबल श्री एस कल्याण सुंदरम। माननीय मंत्री जी, so put number 127. Please. Sir, a statement is laid on the table of the House, sir. For supplementary, Honorable Kalyan. வாய்ப்பளித்தமைக்கு தலைவர்களுக்கு நன்றி. தஞ்சை மாவட்டத்தில் ONGC நிறுவனம் கல்வி மற்றும் கல்வி சார்ந்த பணிகளுக்கு மருத்துவம் பொறுப்பு நிதி, சமூக பொறுப்பு நிதியிலிருந்து செலவு செய்த தொகை எவ்வளவு மற்றும் அதன் விவரங்களை தெரிவிக்கவும், மக்கள் பிரதிநிதிகளை கொண்ட குழு ஏற்படுத்தி செலவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? Thank you. Mani Mantri. Sir, the body of the answer, in fact, provides the details district-wise for the concerned districts, which is given for the year-wise, 2019 to 20, 2020 to 21, 2021 to 22. Insofar as precise details is concerned, as the answer says, this is a board-driven process. Each corporate entity is mandated to spend at least 2%, up to 2% of its net worth, net profit in a given year for identified areas such as, which are again listed here, Mr. Deputy Speaker, sir, on health, which includes nutrition, sanitation, drinking water, education, skill development, rural development, women's empowerment, environmental-oriented initiatives, care for the elderly. And these details are also, as we have mentioned, onloaded onto the MCA portal. All the details are there. But as I said, if still some detail is required, this is a board-driven process, I'd be very happy to sit with the honourable member and go over those details. And I have no doubt that the honourable member already has the details, but I'll be able to supplement them if at all necessary. Thank you. Second supplementary, please be brief. Second supplementary, please. சார், இந்த ஆண்டுதோறும் அதுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி எவ்வளவு? அந்த ஒதுக்கிலிருந்து நாடாளுமன்ற Please. Now 1 o'clock, House stands adjourned. Honourable members, House stands adjourned till 2 p.m.